Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Ever wonder if the answers to today's biggest challenges are actually hiding in plain sight? Maybe in older ideas we've sort of forgotten. In a world constantly rushing for the next big thing, it's easy to overlook the wisdom nestled in what might seem like, old ideas. Right. But what if re-engaging with these foundational works is precisely what we need to navigate our most complex problems? It's exactly the point of this really insightful editorial we're digging into today. Our discussion is based on an analysis we pulled together from a summary generated by an advanced AI, a large language model of this article. Yeah, and this isn't just any article, is it? It's from Reengaging with the Classics, published in the Academy of Management journal. That's right, a really prestigious journal, FT50 listed, so top tier for management research. Definitely. And this editorial, it was crafted by a really impressive team of editors. You've got Mayukh Bermiss from UNC Chapel Hill, Crystal Farr from University of Washington, Tel Simons from Rotterdam School of Management, Anne Terwal from Imperial College, Jörg von Krove from ETH Zurich, and Mark Gruber from EPFL in Lausanne. A great group. Wow, yeah, quite the lineup. And what really jumped out at us from this piece, I think, is its core message. What's that? That reading deeply, really reading, it affirms that wisdom, empathy, human understanding. Well, they aren't things you can just optimize, right? Exactly. They're lived. You gain them through that deep engagement. So true. And look, we really urge you, whether you listen to us regularly or not, try to make time to read this editorial. It's thoughtfully crafted, rigorous. Yeah, definitely worth the read. The link is right there in the show notes for you. So our mission for you today, especially if you're maybe new to academic research or perhaps just about to start your own research journey, is to unpack why these classics matter, how they can actually be a surprising shortcut maybe to understanding today's issue. Yeah, and how you can actually use them effectively. Exactly, how you can use them in your own pursuit of knowledge. So let's explore this wealth of insights together. Let's do it. Okay, so let's start with the basics then. When we talk about classics in academic research, particularly in management, the first question is often why? Why read this old stuff? Isn't it just old news? It's common thought, yeah. But the editorial clarifies this really well. A management classic isn't just defined by age. Right, it's the influence. Exactly. It's influence. It's a widely impactful article or maybe a book that has profoundly shaped theory and practice, often by starting or redirecting a whole conversation in the field. Okay. They call it socially constructed, which means it's something we collectively decide is important and keep coming back to. It stays foundational, gets cited regularly over time. So it's specific to management then, not like, say, Adam Smith's Wealth of Nations, which gets cited everywhere but isn't strictly a management classic itself. Precisely. It's about its role within our field. But here's where it gets interesting. Despite being foundational, these classics often kind of fade in contemporary research. Fade? How so? Not because they're wrong. Not always. Sometimes it's critique, sure. But often it's what the article calls institutional forgetting. Institutional forgetting? Like we just collectively move on? Sort of. Or because these works, especially the big books, are so broad, maybe only certain bits get picked up over time. This leads to what they call typified citations. Like citing it for just one specific point, maybe out of context, without really grappling with the whole argument. Exactly. You said it almost like a ritual without really engaging with the depth. It's easier, maybe? Yeah, I can see that. It's hard work digging into those dense texts. But the article points out a paradox, doesn't it? That criticism can actually bring a classic back to life. It really can. What's fascinating is how rigorous critique, like Granovetter's reevaluation of transaction cost economics back in '85. Right. It didn't kill TCE's influence. If anything, it stimulated more research. It got people talking about it again, engaging with it substantively. So a classic really only dies when people stop talking about it, stop citing it meaningfully. Deep engagement, even critical engagement, keeps it relevant. That's the idea. Yeah. It forces us to, as you said earlier, live with the ideas, wrestle with them. Okay, so if that's what classics are and why they sometimes get overlooked, what does this mean for us now, in these crazy fast-paced times? AI, geopolitical shifts, everything feels like it's changing so quickly. Well, the editorial's argument is that it's precisely because things are changing so fast
that going back to these foundational texts is so valuable. How so? Wouldn't new phenomena demand totally new theories? Sometimes, yes. New theories are definitely needed. But there are moments, maybe especially moments of big change, when re-engaging with a classic is invaluable. Like a shortcut. In a way, yeah. A shortcut to deep understanding. Because these texts, they already wrestled with fundamental human and organizational dynamics. Things about power, structure, motivation, change. That just keeps showing up maybe in new clothes. Exactly. They show up in new forms, but the underlying dynamics might be surprisingly similar. Can you give an example? A classic that's kind of had a comeback. Sure. Think about Selznick's work from 1949 on institutions. His ideas have become super relevant again with all the focus now on institutionalized values within organizations. Okay. And it highlights a really critical point for anyone doing research. You don't always have to invent something brand new. Big contributions can come from extending existing theories, refining them, or maybe blending old and new. Right. Building on the shoulders of giants, as they say. Precisely. It validates that approach. So that leads to the big question, especially for, someone maybe starting out. How do you actually do that? How can scholars effectively use these classics to understand what's happening today? Well, the article offers 3 really practical pathways. Ways to integrate classics into current research that are actually generative, that spark new ideas. Okay, 3 pathways. Let's unpack those. What's the first one? The first is revising a classic. Revising, so like updating it. More than just updating. It means really challenging its core, maybe taken for granted assumptions. Proposing substantive changes to the theory itself. Why would you need to do that? Well, think about it. Many foundational theories came out of a different era. Maybe they were based on large hierarchical manufacturing firms. Right, not today's agile tech companies or gig economy platforms. Exactly. So those theories might need some serious refinement for today's digital, fast-moving, often flatter organizational environments. Okay, that makes sense. Is there a good example of this revising in action? Yeah, a great one is Burns and Stalker's work from 1961, The Management of Innovation. Super famous. Oh yeah, mechanistic versus organic structure. That's the one. They argued the best structure depends on the environment, right? Mechanistic for stable, organic for dynamic. Standard stuff. So how was it revised? Well, CA, Mitsuhashi, and Kirsch, back in 2006, they looked at this again, but specifically for new ventures in really dynamic markets. Okay. And they argued, counterintuitively, that for these new firms, a more mechanistic structure was actually better early on. Really? More rules and hierarchy for a startup in a fast market? That sounds wrong. It does, right. Yeah. But they used Dinchcomb's idea of the liability of newness, basically, how hard it is for new organizations to survive. They showed that new firms actually benefit from some formalization. It reduces ambiguity, helps coordination, increases legitimacy, especially when they're just starting out and don't have established routines or reputations. Wow. Okay, so the revision wasn't just tweaking. It flipped the original idea on its head for a specific context. It showed formal structure isn't always bad. It can be a strategic asset, especially early on. Exactly. And it introduced new ideas like administrative intensity as a performance driver. It's building and refining. That's a fantastic takeaway for a new researcher. Look at a classic theory, question its assumptions in a new context like firm age or industry type. Great stuff. Yeah. Okay, what's pathway number 2? Pathway 2 is repurposing a classic. Repurposing, like taking it off the shelf and using it for something different. Pretty much. It involves using insights from a classic to solve a problem in an adjacent area of theory, somewhere the classic might be relevant, but hasn't really been used much before. Why would that happen? Why wouldn't people connect the dots? Well, classics can be incredibly rich, right? But over time, how we use them can become quite narrow. We pigeonhole them. We might miss other potential applications. Oh, okay, I can see that. Do you have an example of repurposing? Yeah, the article mentions Blau's social exchange theory from 1964, foundational stuff for social networks, power dynamics. Sure, very familiar. But apparently it hadn't been used as much in studies of organizational justice and interpersonal trust. That is interesting. They seem related. So what happened? Colquitt and Rodell, in 2011, they took Blau's work and used it to look again at that justice-trust relationship. Okay. They used Blau's core idea that social exchanges, unlike purely economic ones, require trust to function, to show this really complex back-and-forth relationship between justice and trust. And what was the punchline? The repurposed insight. What was really fascinating was their conclusion about informational justice. It wasn't just about fair procedures, but about managers actually sharing honest,
timely explanations for their decisions. Ah, the why. Exactly. That explanation, that sharing of information, that was the critical exchange currency for building real emotional ties, real trust, that willingness to be vulnerable, more so even than just following the rules fairly. Wow. So the communication becomes the key exchange. That's a subtle but powerful insight taken by applying an old theory to a slightly different problem. Right. They weren't trying to challenge Blau, but they generated a really novel insight for justice research. And you can immediately see how that repurposing opens things up, right? You could apply Blau now to think about trust in, say, online platforms or the gig economy, places Blau never imagined. Definitely. Which brings us to the third pathway, rediscovering a classic. Rediscovering sounds like digging through archives. It kind of is. It means really going deep into a classic, getting fully acquainted with it, often the original book or monograph, to find theoretical claims or nuances that have been overlooked or forgotten, and then bring them back into the spotlight for today's questions. So looking for hidden gems within the original text. Exactly. And books are often great for this because they have so much richness that might not make it into later summaries or citations. Makes sense. What's the example here? March and Simon's Organizations from 1958, an absolute giant, rests on the shoulders of people like Goldner, Selznick, Taylor. A true classic, hugely influential. Hugely. But the editorial argues its richness still holds untapped potential, even now. So someone rediscovered something in there. Yeah, Trevor. Back in 2001, he was looking at voluntary employee turnover. Okay, always a relevant topic. Right. And a lot of the research before him kind of focused just on general job availability, like how easy is it to find any other job, as the main factor in someone deciding to leave. Seems logical. But Trevor went back to the original March and Simon text and found they actually hinted at both general economic conditions and individual attributes influencing that ease of movement. It wasn't just the job market, it was also the person's skills, visibility, things like that. Ah, so a more nuanced view was already there, just maybe not picked up? Exactly. It was hinted at. Trevor identified these previously less explored ideas and actually tested them. And what did that show? Why was that rediscovery useful? It showed that this classic insight, that it's a mix of individual and broader contextual factors driving the decision, is still incredibly relevant today, maybe even more relevant, given how complex careers and job markets are now. That's really cool. It highlights the value of truly reading the original, not just the summaries or the common interpretations. Those subtle hints can spark whole new research streams. Precisely. Careful reinterpretation and testing those hidden ideas. Okay, so revising, repurposing, rediscovering. 3 powerful ways to engage with classics. These pathways really show these works aren't just history, they're active tools for understanding now. Absolutely. So let's pivot slightly. Yeah. How does the editorial specifically connect this to some of the big things happening right now? You mentioned AI earlier. Right. The article explicitly applies this thinking to 3 major contemporary phenomena. There's the AI era, the strategy and structure of today's huge digital tech firms, and leadership in this time of political polarization and geopolitical tension. Okay, let's start with AI. It feels so new, so different. How can decades-old management theories help us understand artificial intelligence? Well, think back to March and Simon again, 1958. Their work on bounded rationality, on human cognitive limits. Yeah. That gives us a starting point, doesn't it? AI systems might help us overcome some of those limits. Process information at a scale humans can't. That's a direct link. Okay, that makes sense. What else? Another classic is Hackman and Oldham's job design theory from '76. Remember, linking job characteristics like skill variety, task identity, autonomy, feedback to motivation and satisfaction. Right, the job characteristics model. How does that apply to AI? Seems like AI might take away some of those characteristics. That's exactly the tension. A recent study by Gia and colleagues, published in AMJ, actually. Okay. They looked at salespeople using AI. For the highly skilled ones, AI handling routine tasks actually freed them up and enhanced their creativity. Good outcome. But for the lower skilled salespeople, the AI seemed to heighten negative emotions. Maybe because it pushed them into more complex interactions they weren't ready for, or took away the simpler parts of the job they were comfortable with. Wow, that's a really important nuance. AI isn't universally good or bad for jobs. It depends on the skills and maybe the task design. Precisely. It raises big questions. Does AI risk lowering task significance? Does it damage the relational parts of work that give meaning?
and what new skills, maybe like emotional intelligence, become even more critical when AI handles the technical stuff. So you could see repurposing other classics here too, like Katz and Kahn on roles changing or Hackman and Morris on team effectiveness. Maybe even thinking about AI as a team member. Absolutely. The potential is huge. Even going way back, Mary Parker Follett's writings from the early 20th century on conflict and integration. They could offer insights into designing work systems that balance social needs and AI-driven efficiency. Fascinating. Okay, what about the second area? The big tech firms, Google, Amazon, Meta, they seem like a totally new breed. In some ways, yes. But Alfred Chandler's classics, Strategy and Structure 62, and The Visible Hand 77, offer a lens. How so? He was writing about GM and DuPont, right? Industrial giants. He was. He explained how those firms use new technologies like mass production to gain efficiencies, generate surpluses, and then diversify their businesses. He talked about the rise of middle management, coordinating all this, the visible hand, allocating resources better than the open market. Okay. And the connection to big tech. Well, today's digital tech offers similar, maybe even greater, efficiencies and surpluses. And what do these tech firms do? They diversify massively. Google isn't just search. Amazon isn't just retail. True. But the structure feels different, doesn't it? Resource allocation seems so centralized now, often with founders or top execs. And we hear constantly about delayering, getting rid of middle managers thanks to tech. Does Chandler's visible hand of middle management still fit? That's an excellent point. And it highlights why we need vigilant reading, as the editorial puts it. Vigilant reading? Yeah, we don't read Chandler to say, oh, the past was perfect, or to just blindly apply his model. We read him to borrow useful insights, avoid reinventing the wheel, but also to critically question which assumptions still hold and which don't. So appreciate the historical context, see the parallels in diversification, but question the bits about structure, like the role of middle management, that might have changed. Exactly. Take what's valuable, but interpret it critically for today's reality. Okay, that makes sense. Now, the third area, leadership in these really polarized, tense times, geopolitics, domestic divisions. It's tough out there for leaders. Definitely. And here, a key classic is James McGregor Burns' Leadership from 1978. Another foundational text. Absolutely. Burns made that famous distinction between transactional leadership, basically, rewards and punishments in exchange, Right. and transforming leadership. This was about leaders elevating followers, tapping into higher motivations, appealing to shared values like justice, liberty, equality. Really inspiring stuff. Became hugely influential. You hear about transformational leadership all the time. Totally. It shifted the focus towards the moral, motivational aspects. But here's the challenge today. Yeah. In a world where, say, geopolitical tensions might force a company to comply with actions that clash with its stated values, how does a leader maintain that transforming stance? Or when there are deep ideological clashes within the organization or its customer base. How do you appeal to shared values when the values themselves seem contested? It's a massive dilemma. Does the uncertainty and risk mean leaders have to prioritize pragmatic safety over aspirational morals sometimes? A tough question. What does the editorial suggest? It suggests we might need a new understanding, maybe kind of ambidextrous or paradoxical transformational leadership. And it points back to Burns himself, who actually wrote about how conflict can energize people, how leadership involves making conscious what's unconscious among followers. So going back to Burns might help us figure out which motives, which goals leaders need to tap into now, even amidst conflict. That's the idea. Re-engaging with his deep thinking about motivation, values, and conflict could spark new insights for leading today. It reminds us leadership isn't just strategy, it's about profound human understanding. It really seems clear then, doesn't it? These classics aren't dusty relics. They offer this incredible, maybe underused resource of ideas and knowledge. Absolutely. And the article makes a strong plea here, urging us to move beyond just, superficial citations, normative, ceremonial, typified citations. The kind of scholarly laziness, as they put it. Yeah. That kind of citing undermines the real theoretical and practical insights we desperately need, especially now. And this feels especially important for those of you just starting your academic journey, right? Definitely. The responsibility falls on all of us who train new scholars, whether it's in courses, through supervision, co-authoring. We need to introduce you to these classics. And not just introduce, but really encourage you to put in the time and energy. Right. To really delve into them, wrestle with them, decipher that wealth of knowledge. And then use it substantively. Build on it.
Extend it. Don't just drop the name in the reference list. Exactly. Live in the ideas, like we said. And the editors also make a point that it's on reviewers and mentors too, isn't it? To proactively suggest when maybe an author could engage more deeply with a relevant classic. Yes. We all have a role in keeping this intellectual heritage alive and generative. Because the real value isn't just knowing about these works. It's in the understanding and the application. Couldn't agree more. We really hope this exploration has maybe sparked some ideas for you, shown the immense value that re-engaging with these foundational works can bring to your own research, your own understanding of the complex world we're in. And remember, if you want to read the full editorial yourself, and we really think you should, the link is right there in the show notes. Please go read it. It's a fantastic piece. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা একটা সম্পাদকী ঘিরে। এটা ছাপা হয়েছে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নালে। ও, এটা তো খুবই নামকরা জার্নাল, FT50 তালিকাভুক্ত। একদম। আর আমরা যে আলোচনাটা করছি সেটার ভিত্তি কিন্তু লেখাটার একটা সারসংক্ষেপ। এটা তৈরি করেছে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, মানে এক ধরনের AI আর কি। ইন্টারেস্টিং। প্রযুক্তির ব্যবহার সবখানেই। হ্যাঁ, তো এই সম্পাদকীয়াটা লিখেছেন ওয়াইসেকাউ বার্মিস, নর্থ ক্যারোলাইনা ইউনিভার্সিটির, আর তার সাথে আছেন বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক গবেষক। কারা কারা? আছেন ক্রিস্টাল ফারহ, ট্যাল সাইমন্স, অ্যান টার্নওয়াল, জর্জ ফন ক্রগ আর মার্ক গ্রুবার, বিভিন্ন জায়গা থেকে। বেশ বড় একটা টিম। আর তাদের লেখাটা পড়লে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার মনে হয়, মানে এই যে জ্ঞান, সহানুভূতি বা মানুষের বোঝাপড়া, এগুলো ঠিক গুছিয়ে তোলার মতো জিনিস না। ঠিক, এগুলো আসলে জীবনে চর্চা করতে হয়, যাপন করতে হয়। একদম। তাই যারা শুনছেন তাদের অনুরোধ করব, মানে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় পেলে এই সম্পাদকীয়টা পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। লেখাটা সত্যিই ভাবনার খোরাক যোগায়। অবশ্যই পড়া উচিত, বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে নতুন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আজকের আলোচনাটা মূলত তাদের কথা ভেবেই, মানে যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন। মূল প্রশ্নটা হলো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পুরনো গবেষণা, মানে ক্লাসিক কাজগুলোর দিকে ফিরে তাকানোটা কেন জরুরি? পৃথিবী তো এত দ্রুত পাল্টাচ্ছে। ঠিক, সম্পাদকীয়তে এই ক্লাসিক কাজগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। মানে এগুলো হলো সেই সব লেখা যা আমাদের ফিল্ডের তত্ত্ব আর প্র্যাকটিসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মানে যেগুলো বড় ধরনের আলোচনার জন্ম দিয়েছে। হ্যাঁ, বা নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। আর এগুলো সময়ের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক থাকে, যদিও একটা ব্যাপার হয় যাকে বলে প্রাতিষ্ঠানিক বিস্মৃতি। প্রাতিষ্ঠানিক বিস্মৃতি মানে কি এটা? মানে সময়ের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ পুরনো ভাবনাগুলো অনেক সময় সম্মিলিতভাবে ভুলে যাওয়া হয়, বা সেগুলোর গুরুত্ব কমে যায় আর কি। আচ্ছা, কিন্তু এখন কেন আবার এই ক্লাসিকগুলোর কথা উঠছে? বিশেষ করে যখন AI, টেকনোলজির এত পরিবর্তন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, এই সব নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে। দেখুন, এটা শুধু নস্টালজিয়া বা পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ নয়, একদমই না। তাহলে এই ক্লাসিক কাজগুলো আসলে বর্তমানের এই বড় পরিবর্তনগুলো বুঝতে সাহায্য করে, কারণ এগুলোতে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন বা ধারণা থাকে যা আজও খুব প্রাসঙ্গিক। মানে চিরন্তন কিছু প্রশ্ন বলতে পারেন। এগুলো আমাদের সেই সব স্থায়ী প্রশ্নগুলোকে নতুন করে বুঝতে সাহায্য করে, আর আজকের যে চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করে। যেমন ধরুন ফিলিপ সেমজনিকের আইডিয়াগুলো। কোন আইডিয়াগুলো? প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ নিয়ে তার যে কাজগুলো। আজকের কর্পোরেট দুনিয়ায় নীতি বা উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কথা হয়, তখন সেগুলো আবার খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। ও আচ্ছা, বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে গবেষকরা কিভাবে এই ক্লাসিকগুলোকে কাজে লাগাতে পারেন? মানে শুধু সাইটেশন দেওয়া বা উল্লেখ করার বাইরে গিয়ে। সম্পাদকীয়তে তো মনে হয় 3টে পথের কথা বলা আছে। হ্যাঁ, ঠিক, 3টে মূল উপায়ের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটা হলো সংশোধন বা রিভাইজ। সংশোধন মানে কি? মানে ক্লাসিক কোনো তত্ত্বের মূল ধারণাগুলোকে আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ করা,
বা একটু বদলে নেওয়া আর কি। যেমন সাইন আর তার সহকর্মীরা একটা কাজ করেছিলেন। কি নিয়ে? তারা বার্নস ও স্টকার্সের পুরনো একটা তত্ত্বকে নতুন উদ্যোগ বা স্টার্টআপের ক্ষেত্রে সংশোধন করে দেখিয়েছিলেন, যে সবসময় হয়তো খোলামেলা সাংগঠনিক কাঠামোই সেরা নয়। আচ্ছা, বোঝা গেল। দ্বিতীয় পথটা হলো পুনর্নির্ধারণ বা রিপারপাস, মানে ক্লাসিক কোনো ধারণাকে এমন একটা জায়গায় বা সমস্যার কাজে লাগানো যেখানে সেটা আগে সচরাচর ব্যবহার করা হয়নি। ও, অনেকটা পুরনো যন্ত্রাংশ নতুন যন্ত্রে লাগানোর মতো। হ্যাঁ, খানিকটা সেরকমই। যেমন ধরুন কোলকুইড আর রোডেল, তারা সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব বা সোশ্যাল এক্সচেঞ্জ থিওরি ব্যবহার করেছিলেন কর্মক্ষেত্রে ন্যায় বিচার বা বিশ্বাস বুঝতে। এটা বেশ নতুন একটা অ্যাপ্রোচ ছিল তখন। ইন্টারেস্টিং। আর তৃতীয়টা হলো পুনরাবিষ্কার বা রিডিসকভার, মানে ক্লাসিক কোনো কাজের ভেতর থেকে এমন কোনো ধারণা খুঁজে বের করা যা হয়তো এতদিন চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজকের দিনে কাজে লাগতে পারে। একদম। যেমন ট্রেভার একটা দারুণ কাজ করেছিলেন। তিনি মার্চ আর সাইমনের অনেক পুরনো একটা বই থেকে কর্মীদের চাকরি ছাড়ার কারণ নিয়ে কিছু ধারণা নতুন করে সামনে আনেন, যা টার্নওভার গবেষণায় নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। বুঝতে পারলাম। তার মানে মূল ব্যাপারটা হলো ক্লাসিক কাজগুলোর সাথে একটা সক্রিয়, মানে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোঝাপড়ায় যাওয়া, শুধু রেফারেন্স দিয়ে থেমে যাওয়া নয়। ঠিক তাই। আচ্ছা, এই সম্পাদকীয়তে কি আজকের দিনের যে বড় চ্যালেঞ্জগুলো, যেমন এআই, সেটার সাথেও কোনো যোগসূত্র দেখানো হয়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কাজের নকশা বা জব ডিজাইন নিয়ে হ্যাকম্যান ও ওল্ডহ্যামের যে ক্লাসিক তত্ত্বগুলো আছে, হ্যাঁ জানি, সেগুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে এআই আসার ফলে কাজের অনুপ্রেরণা বা কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার ওপর কী প্রভাব পড়ছে। এই পুরনো তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে আমরা আরও ভালো, আরও গভীর প্রশ্ন তুলতে পারি। যেমন এআই ব্যবহারের ফলে কাজের কোন অংশগুলো হয়তো বেশি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বা কোনগুলো একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসিকগুলো এখানে নতুন প্রশ্ন তৈরির একটা ভিত করে দেয় আর কি। তাহলে সব মিলিয়ে মূল বার্তাটা কি দাঁড়াচ্ছে? যে গবেষণায় ভালোভাবে এগোতে হলে মাঝে মাঝে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। একদম। পুরনো কাজগুলোকে শুধু ছুঁয়ে যাওয়া নয়, সেগুলোর সাথে একটা গভীর মূল্যায়নমূলক সম্পর্ক তৈরি করাটা জরুরি। আর এটা এই প্রশ্নটাও তুলে ধরে, আমরা কি সত্যি আগের প্রজন্মের গবেষকদের কাঁধে ভর দিয়ে এগোচ্ছি, নাকি শুধু তাদের নাম ব্যবহার করছি? ক্লাসিকগুলোর গভীরে গিয়ে সেগুলোর মূল ভাবনার সাথে যুক্ত হওয়াটাই কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ। যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য এই সম্পাদকীয় থেকে একটা শেষ ভাবনা কি হতে পারে? মানে শুধু লেটেস্ট পেপার না খুঁজে এই মৌলিক কাজগুলোর সাথে সচেতনভাবে যুক্ত হওয়াটা, এটা তাদের প্রশ্ন করার ধরনকে বা গবেষণার গভীরতাকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? এটা সত্যি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার মনে হয় এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে অনেক প্রসারিত করতে পারে। শুধু নতুন কি আছে না খুঁজে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ বা এই ধারণার শিকড় কোথায়, এই প্রশ্নগুলো করতে শেখায়, আর তাতে গবেষণার মান বাড়ে। একদম। এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम बात कर रहे हैं एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल यानी AMJ में छपे एक संपादकीय लेख की। ये जर्नल FT50 लिस्ट में भी शामिल है, काफ़ी प्रतिष्ठित है। और ये जो चर्चा है, ये उस लेख का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM आधारित सारांश है। इसके संपादक हैं वाइस सेखू बर्मिस, क्रिस्टल IC फरहा, ताल सिमंस, एनी LJ टेरवॉल, जॉर्ज वॉन क्रॉग और मार्क ग्रूबर। ये सब दुनिया के माने हुए संस्थानों से हैं। इस संपादकीय को पढ़ते हुए ना एक बात बहुत साफ लगती है कि ज्ञान, सहानुभूति और जो मानवीय समझ है, उसे आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। तो हम सबसे यही कहेंगे, चाहे आप इस चैनल से जुड़े हों या न हो, प्लीज़ इस लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिएगा। बहुत अच्छा लिखा है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अकेडमिक शोध में नए हैं, अपनी रिसर्च जर्नी अभी शुरू ही कर रहे हैं। तो पहला सवाल यही मन में आता है कि भाई दशकों पहले जो शोध हुआ, जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं, उन्हें आज क्यों पढ़ा जाए? मतलब आज की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए वो पुराने लेख कैसे काम आ सकते हैं? संपादकीय का तर्क है कि मैनेजमेंट का क्षेत्र जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे उन बुनियादी लेखों पर लौटना
और भी जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, पर पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये मैनेजमेंट क्लासिक आखिर हैं क्या। संपादकीय इसे एक ऐसे लेख या किताब के तौर पर देखता है जिसका सिद्धांत और व्यवहार पर बहुत गहरा, बहुत व्यापक असर पड़ा हो। अक्सर ये किसी फील्ड में एक नई बहस छेड़ देते हैं या उसे कोई नई दिशा दिखाते हैं, और ये समय के साथ भी प्रासंगिक बने रहते हैं। मतलब इनका जिक्र बार बार होता है। आगे के शोध के लिए ये एक तरह से नींव का काम करते हैं। हालांकि हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी संस्थागत विस्मृति हो जाती है। मतलब समय के साथ संस्थान या फील्ड उन पुरानी जरूरी बातों को भूलने लगते हैं। अच्छा, हाँ ये होता है। तो फिर इनसे दोबारा जुड़ना क्यों जरूरी है, खासकर आज के बदलते समय में? क्या ये सिर्फ पुरानी बातों को याद करना है? नहीं, सिर्फ पुरानी यादों में खोना नहीं है। असल में ये क्लासिक्स हमें उन बुनियादी, उन स्थायी सवालों की गहरी समझ देते हैं जो मैनेजमेंट में हमेशा से रहे हैं। इससे हमें आज की जो चुनौतियां हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझने और कह सकते हैं फ्रेम करने में मदद मिलती है। संपादकीय 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है कि कैसे हम इन क्लासिक्स को आज के रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कौन से तरीके हैं? पहला है क्लासिक को संशोधित करना, मतलब रिवाइजिंग अ क्लासिक। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी पुराने स्थापित सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उनको चुनौती देते हैं और उसमें आज के हिसाब से कुछ ठोस बदलाव सुझाते हैं। जैसे एक उदाहरण है बर्न्स एंड स्टाल्कर का। उन्होंने कहा था कि बदलते माहौल में डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक यानी लचीली संरचना बेहतर होती है। हाँ, ये तो काफी स्टैंडर्ड माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन साइन और उनके साथियों ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, जो नए उद्यम हैं जिनमें शुरुआत में लायबिलिटी ऑफ न्यूनेस होती है, मतलब नई होने की दिक्कत है, उनके लिए शुरुआत में समन्वय और वैधता पाने के लिए एक ज्यादा नियमबद्ध यानी मैकेनिस्टिक संरचना फायदेमंद हो सकती है। तो ये हुआ संशोधन। समझ गई, मतलब पुरानी थ्योरी को आज के संदर्भ में थोड़ा बदलना। सही। दूसरा तरीका है क्लासिक का पुनः प्रयोजन करना, रीपर्पजिंग अ क्लासिक। इसमें हम किसी क्लासिक के आइडिया को लेते हैं और उसे किसी ऐसी जगह या ऐसी समस्या पर लागू करते हैं जहां उसे आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब किसी और फील्ड में ले जाना। हाँ, या उसी फील्ड में किसी अलग प्रॉब्लम के लिए। जैसे ब्लॉ का सामाजिक विनिमय सिद्धांत है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये आमतौर पर नेटवर्क या पावर डायनेमिक्स समझने में इस्तेमाल होता है, पर कॉलक्विट और रुडेल ने इसे न्याय और विश्वास के बीच के रिश्ते को समझने के लिए इस्तेमाल किया। ये उसका एक नई उपयोग हो गया। वाह, ये तो वाकई क्रिएटिव है। और तीसरा है क्लासिक को पुनः खोजना, रीडिस्कवरिंग अ क्लासिक। कभी कभी क्या होता है कि क्लासिक लेखों में कुछ ऐसे विचार या तर्क छिपे होते हैं जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं गया होता। तो इस तरीके में हम उन अनदेखे दावों को ढूंढकर फिर से फोकस में लाते हैं। जैसे ट्रेवर ने मार्च और साइमन की मशहूर किताब ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा देखा और उसमें से स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने यानी वॉलंटरी टर्नओवर पर कुछ ऐसे विचारों को निकाला जिन पर पहले बात नहीं हुई थी। उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ बाजार या व्यक्तिगत कारणों पर नहीं बल्कि दोनों के मिले जुले असर पर निर्भर करता है। ये तीनों तरीके तो बहुत दिलचस्प हैं। मतलब ये दिखाता है कि पुराने काम पर वापस जाने से भी आज के रिसर्च के लिए एकदम नए आइडियाज मिल सकते हैं। हाँ। यहाँ तक कि एआई या राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे एकदम नए विषयों पर भी शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन एक बात जरूरी है। संपादकीय इस पर जोर देता है कि क्लासिक्स के साथ हमारा जुड़ाव गहरा होना चाहिए। सिर्फ नाम का उल्लेख कर देना या सतही तौर पर साइट कर देना काफी नहीं है। हाँ, वो तो है। उन्हें ध्यान से पढ़ना, उनके लिखे जाने के समय का जो संदर्भ था उसे समझना और आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है इसका गंभीरता से मूल्यांकन करना, ये सब जरूरी है। और ये नए शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड्स के पीछे ही ना भागें बल्कि अपने क्षेत्र की जो नींव है उसे भी समझे। तो निष्कर्ष के तौर पर जो लोग अपनी रिसर्च यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत साफ संदेश है। क्लासिक्स को नजरअंदाज मत कीजिए। वो सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, वो एक तरह से एक जीवित संसाधन है। हाँ, निश्चित रूप से इन मूलभूत लेखों को संशोधित करने या पुनर्प्रयोजित करने या फिर से खोजने से शोध में वाकई नया और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं, पर उन कंधों को एक नई ताज़ा नज़र से भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार में छोड़ना चाहूंगी। जैसे आजकल शोध संश्लेषण के लिए एआई जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है ना। हाँ।
तो ऐसे में विद्वान ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो क्लासिक ग्रंथों के साथ गहराई से जुड़ने वाली समझ, वो जो उनके साथ वाकई संघर्ष करने से आती है, उसे बनाए रखें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सारांशों का सारांश बनाने लग जाएं? ये बहुत अहम सवाल है आज के दौर में, और शायद इसका जवाब उसी बात पे छिपा है जो संपादकीय कहता है। शायद वही गहरा जुड़ाव, वही संघर्ष उसी ज्ञान और समझ को जन्म देता है जिसे, जैसा कि आपने शुरू में कहा था, अनुकूलित नहीं किया जा सकता, ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, उसे तो जीना पड़ता है। तो हाँ, हम एक बार फिर देंगे कि मूल लेख को जरूर पढ़ें, लिंक नोट्स में है, वो अनुभव बहुत अलग होगा।